Yes, we are live, sir. Hello and good evening. Welcome everyone. Today we will be discussing about amalgamation of partnership firm. If you have joined the session, type a hi, write your name so that I am able to see you all. Good evening everyone, those who have joined. The topic for today is amalgamation of partnership firm. Yes, those who have joined, I would like to request them. Good evening everyone, those who have joined. Topic for today, you can type hi so that and your name. We will shortly start with the lecture. In the meantime, the basics of the chapter we had already discussed. We have understood what is required in case of amalgamation. So amalgamation as a concept is basically merger or coming together of two different firms which are doing their business individually. Amalgamation of partnership firm includes many aspects. So if we talk about amalgamation of partnership firms, it's coming together of two different firms for the benefit of both the firms. For example, Messrs. A and Company having A and B as partners amalgamate with Messrs. C and Company having C and D as partners and form a new firm, Messrs. AC and Company. So you have to remember here that जो जुने firm से, that is Messrs. A and Company and Messrs. C and Company, they will be called as amalgamating firms. They will be called as amalgamating firms. So what are amalgamating firms? Amalgamating firms are basically those firms which have agreed to amalgamate. And जो नया firm बनता है, that is Messrs. AC and Company, that will be called as amalgamated firm. Words याद रखना, amalgamating firm is our old firm. Amalgamating firm is our old firm and amalgamated firm is our new firm. Very simple words, technical words याद रखने हैं. Accounting process. So what happens in amalgamation of partnership firm? हमारा दो काम है. We have to close the books of old firms, that is the amalgamating firms, and record
the transactions in the books of हम लोग को क्वेश्चन में जूने फर्म्स के डेटा दिए जाएंगे, ओल्ड फर्म्स का बैलेंस शीट दिया जाएगा, हम लोगों को वो लेकर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे. इन दैट एडजस्टमेंट्स वी विल बी गिवन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ assets and liabilities. So with the help of revised value of assets and liabilities, first we will be calculating something called as purchase consideration. क्या कैलकुलेट होगा? Purchase consideration. Purchase consideration क्या है? It is the amount payable by the new firm to the old firms for assets and liabilities taken over. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं किसी का भी बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ तो मुझे उसको पेमेंट करना है. सो जो मैं पैसा देने को रेडी हो जाता हूँ, that is what is the purchase consideration. And I am very sure you all know the formula. It is calculated by using the formula. What is that formula? PC due is equal to, yes, you can all participate with the help of chat box, assets taken over minus liabilities taken over. तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला के द्वारा हम लोग जो है we try to calculate the value of assets and the liabilities in the firm. So that is our PC due. PC due is the most important calculation that all of you have to understand, and the entire chapter amalgamation of partnership firm depends upon. तो बैलेंस शीट में जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हैं, द बेसिक फंडामेंटल assumption is all assets and liabilities are taken over unless otherwise stated. So if they specifically state that a particular asset or a particular liability is not taken over, only then you will assume that it is not taken over. Otherwise, you will assume that all assets and liabilities are taken over. I hope everyone is there with me and understanding what is the logic, what is the concept. क्या है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? If you are there with me, give me a thumbs up so that I can understand. Yes, you write a PC due. Yes, very good evening to all of you, those who have joined. I'm just revising with the basics of amalgamation once again so that those who have joined can understand the fundamental of the chapter. Great. Now, to close the books of the old firm, अगर हम लोगों को ओल्ड फर्म क्लोज करना है तो हम लोग 3 लेजर अकाउंट बनाते हैं. We prepare simple 3 ledger accounts. First ledger account is realization account. Remember, dear friends, in this account, all assets and liabilities, all the assets and liabilities of the old firm will be transferred at book values. सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज जैसे दिए हैं, एसेट्स ऑन द डेबिट साइड, लाइबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड, हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. देन वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें क्या आएगा? सो वी विल हैव कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस. वी विल हैव capital account balances obviously on the credit side and reserves and surplus. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व या फिर तुम लोग को रिजर्व फंड दिया होगा तो वो सारे आइटम्स जो है वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. All these reserves and surplus will be distributed among partners in their profit sharing ratio. The new firm account, this is going to be very important because ये हमारा PC due रिकॉर्ड करेगा. क्या रिकॉर्ड करेगा? हमारा PC due. हमारा स्टेप्स बहुत सिंपल है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म. क्या क्या स्टेप्स करते हैं? तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे दोस्तों? वी विल ट्रांसफर all assets
and liabilities in the balance sheet to the above accounts. बताया कि एसेट रहेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी रहेगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है, कैपिटल रहेगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, और अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस आया वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। और दूसरा स्टेप है लिखो पीसीड्यू, बस खत्म। पीसीड्यू का जर्नल एंट्री याद रखने का, इट इज न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी सिंपल, हमने जो पीसीड्यू कैलकुलेट किया वर्किंग नोट द्वारा उसको हम लोग जो है वी विल रिकॉर्ड इट इन आवर जर्नल। वंस दिस इज डन तो वी विल क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लोजिंग द अकाउंट्स में पहला नंबर आएगा हमेशा वो है रियलाइजेशन अकाउंट। Obviously realization account में we will either get profit or we will get loss on realization. This will be distributed among partners in their profit sharing ratio. Thereafter we will close partners capital account. इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे partners capital account and इसमें जो भी balances आएगा it will be transferred to new firm account. फाइनली न्यू फॉर्म में याद रखना, एक जगह पे आया पीसी और दूसरी जगह पे आया बैलेंस शीट, याद रख लो दिस विल बी टैली। जब टैली होता है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ पीसी ड्यू इज इक्वल टू रिवाइज्ड पार्टनर्स कैपिटल। एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स न्यू फॉर्म टैली, एनएफ टैली। Yes, dear friends. Great. So this was very short and sweet revision. I will be sharing the PDF, okay, and you can all download in your mobile phones. मैं आप लोगों को उसका कहाँ पर डाउनलोड होकर मिलेगा इसका भी पता मैं बताऊंगा at the end of the session. Till that time, all of you understand the basics. NF Tally. न्यू फॉर्म टैली हो गया, ओल्ड फॉर्म का काम खत्म। ए एंड कंपनी एक बार करेगा, सी एंड कंपनी एक बार करेगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ओल्ड फॉर्म। एमलगमेशन में पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। यस, इट्स वेरी हैप्पी टू सी सो मेनी स्टूडेंट्स जॉइनिंग एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू बेनिफिट बाय दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सिंपल सा काम है। अब आज का महत्वपूर्ण काम चालू करते हैं, दैट इज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। लेक्चर के शुरुआत में मैंने न्यू फॉर्म को एक नाम दिया था, मैंने न्यू फॉर्म को एक नाम दिया था। जिन लोगों को वो नाम याद है वो लोगों ने हमारे चैट बॉक्स में लिख के दिखाना, व्हाट इज द न्यू फॉर्म कॉल्ड एज। न्यू फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? न्यू फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज what? It's very nice to see all of you being very active in the chat box and giving so many active responses. I'm looking out for the other name of new form. So the new form is also called as amalgamated form. I repeat again, it is also called as amalgamated form. और जो forms old forms है, it is called as amalgamating forms. जो हो गए वो amalgamated, जो हो रहे हैं वो amalgamating. ठीक है, दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड। सो इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म क्या होता है, वी हैव जर्नल एंट्रीज। तो बेसिक जर्नल एंट्री अगर हम लोग समझे तो पहला तो होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। हमने पीसी के स्टेटमेंट में बनाया ना, वही सारा चीज इट विल बी एट द रिवाइज्ड वैल्यूज। तो कहाँ देखने का, तो पीसी स्टेटमेंट देखने का।
क्या देखने का? पीसी स्टेटमेंट देखने का। पीसी स्टेटमेंट में क्या होगा? हमारे पास सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज होंगे एट देयर रिवाइज्ड वैल्यूज। तो सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट 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 डेबिट, टू लाइबिलिटीज क्रेडिट 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 क्रेडिट, एंड इट विल बी इंस्टेड ऑफ पीसी, हमने थोड़ी देर पहले समझ के लिया दैट पीसी ड्यू इज इक्वल टू रिवाइज्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो आप लोगों को ये बात समझ जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन के एग्जामिनर ने आपको बोला पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म या प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, तो इतना ही काम नहीं है, आपको पहले ओल्ड फर्म करना कंपलसरी है। आपको पहले ओल्ड फर्म करना कंपलसरी है। अनलेस यू डू द ओल्ड फर्म यू कैन नॉट कम टू द न्यू फर्म। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड। ऐसा दिखाने के लिए कभी कभी हम लोगों को दिखता छोटा काम है, लेकिन जब हम लोग काम करना चालू करते हैं तो मालूम पड़ता है कि अरे ये तो सुरंग काफी बड़ा है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? अगर एग्जामिनर ने पूछा पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म या बोला प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, तो अंदर क्या छुपा है? बात छुपा है एक सिंपल सा राज। क्या राज छुपा है? चलो जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ मुझे, क्या राज छुपा है? अगर एग्जामिनर ने बोला पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, so what is the secret behind it? First you have to pass or prepare ledger of the old firm, calculate the revised capital, and then you have to go to the books of the new firm. सीक्रेट बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एग्जामिनर कभी कभी हमको एक्स्ट्रा काम दे देता है, एक्स्ट्रा नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ इट। एंड देन you can have journal entry for goodwill written off. So kabhi kabhi all the partners of the new firm may decide to write off goodwill. So if goodwill is written off, it is all partners capital account debited to goodwill account. And finally you may have something called as readjustment of capital. Now as teachers, every paper setter knows one thing that इतना सारा काम एक साथ दे देंगे तो आप 3 घंटे में सिर्फ एमलगमेशन करते बैठोगे। सो इतना नहीं पूछते हैं जनरली। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली। आई एम नॉट श्योर व्हाट विल हैपन एट द एग्जामिनेशन, बट यस, ओल्ड फर्म्स कंपलसरी नॉलेज होना जरूरी है। ओल्ड फर्म्स कंपलसरी नॉलेज होना चाहिए। यस, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ओल्ड फर्म यू कैन नॉट गो टू द न्यू फर्म। बट इतना है कि लिखते जाओगे, फटाफट फटाफट लिखोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड यस दिस इज व्हाट इज टू बी डन। हाँ, यहाँ हमको ये काम करना। Once you are done with journal entries, my dear friends, you may be asked to prepare balance sheet of the new firm. Again, that is an easy job. You have to look at the PC statement and of course journal entries में अगर आप लोगों ने कुछ काम किया होगा, गुडविल राइट ऑफ किया होगा, तो आप लोगों को उसका इफेक्ट दिखाना होगा। अदरवाइज थिंग्स आर प्रीटी मच easy. I'm sure that you all are able to understand what I am talking about. क्या क्या बातें हो रही है आप लोग समझ पा रहे हो? तो हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, I need to know those who are there live with me now, you are understanding what is happening. क्या क्या बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस बात का मुझे एक प्रूफ चाहिए। I am expecting a thumbs up. Once again, let us start. Those who are there live, join me in the live session now. Great. I'm very happy with the response that I'm getting on the chat box. It's wonderful. And in case you have any doubts in between, so this is the time you can ask your doubt before we transit from the practical, from the theory to the practical question. Is there any concept? Is there any logic? Is there any theory which you want me to repeat again? You can write it in the chat box. सो एक पेज में मैंने पूरा थियरी को लेके आने का कोशिश कर दिया। क्या क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों ने उसको लिख दिया। ठीक है, when I'll share with you the PDF, you can understand the things in a pretty much easy manner. Yes, thank you my dear friends for that wonderful response. That's great to see. Nice one. Yeah,
So presuming that there are no doubts, let us start with an example. I have a question with me available here. Just as the screen changes, you will find out that there is a question in front of you. So the question reads something like this. अमेलगमेशन का एक और खास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं. ऐसा जरूरी नहीं कि दो पार्टनरशिप फर्म मिलके आए तो ही अमेलगमेशन होता है. एमलगमेशन का एक और प्रकार होता है. इस प्रकार में ये होता है कि हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म और एक सोल ट्रेडर का भी एमलगमेशन देख सकते हैं, क्योंकि रिजल्टिंग नया फर्म जो है इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ फर्म ओनली. वैसा एक सोल ट्रेडर और एक सोल ट्रेडर साथ में आ गए तो भी उसको हम लोग बोलते हैं एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो टेक्निकली वहां पर पहले से कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं था, लेकिन फिर भी जब सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडर मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. My dear friends, I am moving to question number 7 of the sheets which I share in the classroom. This is question number 7. So those who are using mobile phones, those who have my sheets can use it. बाकी लोगों को मैं एंड ऑफ द सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास शीट्स नहीं है तो डोंट वरी टू मच, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सेम. बट शायद आज की आज ना हो, यू कैन चेक इट आउट विथ आवर वेबसाइट at Vedanta College and you will find all my questions there. So those who are not having it, I'm just sharing with you once again. So the screen will now share the question. After I discuss the question, we will go on to the answer part. So the question reads something like this. X and Y are two sole traders. X and Y कौन है? हमारे sole trader है. Their balance sheet as on 1st January 2002 are given below. तो X एक sole trader है, Y एक sole trader है. हम लोग इसका amalgamation सीखने वाले हैं. Sundry creditors. Now, when a bank name is given on the liability side, it means bank overdraft. It has a credit balance in bank account, which is bank overdraft. And we have capital account. Then we have plant and machinery, stock in trade, and sundry debtors. We are discussing question number 7. Likewise, Y के balance sheet में we have creditors, capital account. Assets we have plant and machinery, stock in trade, sundry debtors, cash at bank. It says they agree to amalgamate their business on 1st January 2002 on the following terms. Plant and machinery were to be reduced by 10%. Now this is a common adjustment and it is applicable for both the balance sheet X as well as Y. Stock in trade was to be reduced in case of X by 20% and in case of Y by 20%. ठीक है, दोनों का सॉरी Y के इसमें 10% है. Okay. A reserve of 2.5% is to be raised against sundry debtors. So RDD create करना है दोनों फॉर्म में. Each partner is to be credited with गुडविल ऑफ रुपीज 50,000. दोनों को जो है गुडविल का पैसा देना है. ठीक है, हम लोगों को क्लियर कट बोला हुआ है कि उन लोगों को गुडविल देना है. द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्स इज टू बी पेड ऑफ बाय हिम. ये भी बोलता है कि हम लोगों को जो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा है वो दे हैव टू डेफिनेटली पे ऑफ. नाउ व्हेन एन asset or a liability is taken over by the partner, जब एक एसेट या एक लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर करता है तब दोस्तों याद रख लेना उसके लिए लाइबिलिटी फर्म से जाता है. लाइबिलिटी फर्म से क्या हो रहा है? जा रहा है. तो लाइबिलिटी जब सेटल होता है तो लाइबिलिटी अकाउंट नॉर्मली डेबिट होता है, बट सिंस दिस इज लाइक डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड.
और उसका क्रेडिट जो है इट विल बी गिवन टू द कंसर्न्ड पार्टनर, उसका क्रेडिट जो है इट विल बी गिवन टू द concerned partner. So this is very very important. All of you must understand this very carefully, that when liability is taken over you have to understand one basic aspect, and that aspect is liability के बदले में हम लोग लिखेंगे realization account debited. We will write what? Realization account debited. And you have to remember one more thing. And what is that aspect to be importantly? किसको क्रेडिट देंगे हम लोग? पार्टनर्स को क्रेडिट। सो एक बार ये आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया तो एक जर्नल एंट्री इधर ज्यादा आने वाला है। नॉर्मली हम लोग ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज करके खत्म करते, पीसीड्यू लिखते और अकाउंट क्लोज करते हैं। बट अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन, चार तरीके के ट्रांजैक्शन में बोलता हूँ, सिर्फ ध्यान में रख लेना। सेल ऑफ एन एसेट, repayment of liability, asset taken over, liability taken over. In short, these are called as disposal of assets and liabilities. इसको बोलते हैं disposal of assets and liabilities. So in that scenario, what you are expected to do is write one additional journal entry. It may be related to sale, it may be related to repayment, it may be related to asset taken over, it may be related to liability taken over. So one such example we are having here, and that is liability taken over. The question says prepare ledger accounts in the books of the X and Y and prepare balance sheet of the new firm. तो जर्नल नहीं पूछा है लेकिन हम लोगों को बैलेंस शीट पूछा हुआ है. So I go to my screen and we start with solution of the answer. I start with solution of the answer. So solution में क्या होता है? If I try to explain you in very simple words, this is question number 7. हम लोग पहले करेंगे calculation of purchase consideration. First step is we will do calculation of purchase consideration. Now for the purpose of calculating purchase consideration, हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे. तो आप लोग स्केल पेंसिल से बना सकते हो. आई एम यूजिंग ए टेबल टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टेबल. सो राइट particulars Mr. X and Mr. Y. फर्स्ट आएगा assets taken over. I'm sure that all of you are ready with your calculators. You will need those because we are having a few adjustments that we have to cater to. So what it says, plant and machinery. And if you remember the adjustment of plant and machinery, it has been given that it has to be reduced by 10%. So dear friends, if we try to calculate 75,000 का 10% होता है 7,500, और अगर मैं माइनस करूंगा so I will get 67,500. वही Y का प्लांट एंड मशीनरी अगर मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है 1,05,000. मुझे दिख रहा है 1,05,000. उसमें से अगर मैं 10,500 माइनस करूंगा so I will get 94,500. I will get 94,500. How did I get 94,500? It is 1,05,000 minus 10,500. Okay. Next, we are having stock in trade. So for stock in trade, the adjustment was pretty simple. And what was that adjustment? X के लिए it has to be reduced by 20%. X के लिए 20% कम करना है तो 1,00,000 का 20% होता है 20,000, माइनस करके आएंगे 80,000. एंड इन केस ऑफ Y अगर हम लोग देखें तो इट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. 50,000 का 10%, 5,000 होता है, माइनस करोगे तो आएगा 45,000. फाइन. Let us proceed further. We have debtors. Debtors के ऊपर भी RDD क्रिएट करना है. कितना परसेंट RDD? 2.5%. So I'm just opening my calculator
for all of you to understand the calculations also easily. I'm sure that you are able to see that the value of debtors given in the question is rupees 1,25,000 and I have to calculate 2.5%. So 1,25,000 multiplied by 2.5%, that is 3,125. If I deduct 3,125 from 1,25,000, I will get 121,875. And in case of Y, the value of debtors is 1,10,000. So 1,10,000 ka again I calculate or deduct rather 2.5%. So 1,10,000 multiplied by 2.5%, that is 2,750. If I deduct 1,10,000 from 2,750, I get 1,07,250. You all have calculators at your level which is available to you. Please make use of it. And if you look at Y, there is an extra item which is cash at bank. X में तो नहीं है, नहीं रहेगा तो dash, not applicable. And Y में we have cash balance of 20,000. The most important thing that every student must understand in case of amalgamation is you always will have goodwill. आपको हमेशा goodwill दिया जाएगा. तो वो goodwill कहाँ दिया जाएगा? एडजस्टमेंट में दिया जाएगा. दोनों फॉर्म्स के लिए यहाँ पर बोला गया है the value of goodwill is 50,000. This is how you calculate your assets. So dear friends, I make it as a small alphabet A. What is small alphabet A is nothing but assets taken over. Again, we have to calculate the total. So हम total calculate करने को निकल जाते हैं. क्या क्या values दिया है? Let us try to understand. We have 67,500 plus 80,000 plus 1,21,875 plus 50,000. So the total of assets taken over for Mr. X is 3,19,375. It's 3,19,375. If we go for Mr. Y, it is 94,500 plus 45,000 plus 1,07,250 plus 20,000 plus 50,000. So that totals to 3,16,750. 16,750. I hope all of you are there understanding the logics. When we say liabilities taken over, क्या है liabilities taken over? ये हम लोगों को कितना है based on the balance sheet given to us. So if you look at the balance sheet of the question, हमको देखने मिलता है दोनों फॉर्म में एक ही लाइबिलिटी है and that is creditors. X and company में we have creditors of rupees 1 lakh and Y and company में we are having creditors worth rupees 85,000. So dear friends, we are having liabilities का total with us, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट B.
obviously since there is a single item, that will be only the total. किसी के दिमाग में अचानक आएगा, सर वो बैंक ओवरड्राफ्ट, we read bank overdraft in X, why have you not taken over? Now bank overdraft is not taken over by the new firm, it is taken over by X, so we are going to credit Mr. X for that liability taken over. I'm sure that all of you remember what I say. So dear friends, liability is taken over means liability taken over by the new firm. Liability taken over means liability taken over by the new firm. Here we are having our PC due. So 3,19,375 minus 1 lakh will give 2,19,375, and for 3,16,750 minus 85,000, we will be having 231,750. 2,31,750. So that is the amount of our purchase consideration due. That is the amount of our purchase consideration due. I am very sure about this that all of you have understood the calculation, the logic behind calculating PC and the steps to calculate the same. If you all are there with me, if you have understood what is happening, you can all give me a thumbs up so that I can understand, yes, how it is happening. Perfect. Yes, many of you are calculating, and that's very nice to see. Perfectly all right. I'm very happy that all of you are able to connect, to calculate, to know, to understand, and to enjoy accounts as we learn this wonderful subject. Perfect, perfect. Very nice, my dear friends. Keep on your inspirations, keep on your hard work high, and I'm sure that you will all enjoy learning accounts. It will never be a boredom. Great. So let us proceed further and start closing the books in the books of X. As I explained to you, as I spoke to you right at the beginning of the lecture, the old firm, the amalgamating firm, we will start with realization account. Generally, now account takes the maximum space as far as this particular topic is concerned. Realization account will occupy maximum space. तो उसको उतना जो जगह चाहिए उसको पेज में 3/4 जगह आप दे सकते हो. So particulars are the column. Sure that you all might give more space. ठीक है, जगह छोड़ते वक्त हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से अकाउंट को कितना जगह लगता है. अकाउंटिंग में प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सारी बातें जो है हम लोग अच्छा नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि ये सोल ट्रेडर था इसीलिए हमको एक काम से काम हो जाएगा एंड वी विल प्रिपेयर ओनली एक्स कैपिटल अकाउंट. And likewise, we will prepare new firm account. क्या बनाएंगे हम लोग? New firm account. तो 3 अकाउंट हमारे तैयार हो गए. ठीक है. I'm sure that you all are ready to go ahead with our accounting treatment. Yes. I'm very sure that you all are understanding. You all are with me solving, writing the things. Yes, my dear friends. So, when we talk about accounts, जब हम लोग बात करेंगे अकाउंट के बारे में तो बैलेंस शीट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो एक्स का बैलेंस शीट अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स के बैलेंस शीट में पहला आइटम दिखता है क्रेडिटर्स. वो क्रेडिटर्स आएगा हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. फिर हम लोग को दिखता है बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताया था आप लोगों को, सिंस इट इज टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स, उसका क्रेडिट एक्स को जाएगा. नाउ देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट. पहला ट्रांसफर कर देते हैं और फिर बाद में उसको क्रेडिट देंगे, या डायरेक्टली अगर आपको समझ में आता है आप डायरेक्ट क्रेडिट दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर आंसर विल रिमेन द सेम. लेकिन सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में
फर्स्ट लाइन जो है इट इज ऑलवेज रिजर्व्ड फॉर कैपिटल, सो वी राइट कैपिटल बैलेंस 1,50,000। ठीक है, और मैं थोड़ा लॉन्ग कट प्रिफर करता हूँ, इसीलिए पहले मैंने जो है बैंक ऑफ इंडिया जो दिया है लाइबिलिटी साइड में उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, दैट इज 50,000। आई रिपीट, आई टेक वन मोमेंट हियर वंस अगेन, बैंक ओवरड्राफ्ट ये जो लाइबिलिटी है इट इज टेकन ओवर बाय एक्स। इसका दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, एक एज ए नॉर्मल लाइबिलिटी, ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और बाद में लाइबिलिटी टेकन ओवर का जर्नल एंट्री जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, बाद में पास करो। या अगर आप पहले से क्लियर हो कि मेरे को मालूम है लाइबिलिटी ये जो है वो टेकन ओवर, तो डायरेक्टली उसको आप एक्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डायरेक्ट लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट। Coming on to the assets part, so we are having first one, plant and machinery. Plant and machinery, the value of plant and machinery is given as 75,000. Thereafter we have stock, the value of stock is given as 1,25,000. Then we are having sundry debtors. Value of sundry debtors is given as rupees. Okay, sorry, I am sorry. The value of stock is 1 lakh and the value of debtors is 1,25,000. तो बहुत सिंपल स्टेप्स है, हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दिया। अब हमेशा पीसी ड्यू का एक ही जर्नल एंट्री इस एमलगमेशन चैप्टर को ड्राइव करती है, वो याद रखने का, पीसी ड्यू न्यू फॉर्म अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू फॉर्म के डेबिट में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। The amount of PC due, that is 2,19,375, 19,375। ऑब्वियसली जर्नल एंट्री है तो हम लोग लिखते वक्त रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ रिकॉर्ड होगा वो? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, बाय न्यू फॉर्म अकाउंट 2,19,375। परफेक्टली ऑल राइट। देन इस क्वेश्चन का खास बात, वो जो बैंक ऑफ इंडिया था वो टेकन ओवर बाय एक्स है, तो एक्स को उसका क्रेडिट दे दिया जाएगा और लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट 50,000। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। और इसका सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू विल बी 50,000। सिंपल, द वर्क इज डन। इफ द वर्क इज डन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3 3,50,000 मेरे को क्रेडिट साइड का टोटल दिख रहा है। द टोटल ऑन द क्रेडिट और डेबिट साइड इज 3,50,000, and when I look at the total on the credit side, definitely I see a higher total, which is 3,69,375, since the total of credit side is more, since the total of credit side is more, हम लोग दोनों जगह पर टोटल 369,375 लिखेंगे और जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म होता तो हम लोग इसको डिवाइड करते अमॉन्ग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट सिंस यहाँ पर सोल ट्रेडर की बात आई है, हमारा काम आसान है, इसको हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू विल बी 19,375। अगर आपको स्टेप्स याद होगा तो डेफिनेटली आई हैड स्टेटेड दिस अर्लियर, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आता है दैट इज ट्रांसफर्ड टू न्यू फॉर्म अकाउंट, and the total on the credit side I see is 219,375. I'm sure all those who are with me are able to see this total. So if you are there with me, type
total in your chat box. टोटल टाइप करो और x के कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू न्यू फॉर्म अकाउंट. बहुत ही सिंपल सा काम है. ट्रांसफर कर देंगे 2,19,375 and naturally by X capital account 2,19,375, and what we see a very happening thing that the total of debit and the total of credit both are same, and our first mission, that is closing of X firm, is completed. बस यही सिलसिला हमको और एक 10 मिनट कंटिन्यू करना है, and we have to close the books of Mr. Y. If you are all ready, you can just give me a thumbs up. And in the meantime, yes, I'm very happy to see all the responses, my dear friends. This is really very good. And if you are there with me still, if you are enjoying the process, type the word next. अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, type it next so that we go for Y. And if anybody is having doubt in the meantime, you can please type your doubt in the chat box so that I am able to see it and I will be happy to help you out. Perfect. Very nice. Great. हम लोग हमारा खुशी का सफर कंटिन्यू करते हैं and we go to the books of Y. So since the accounting is the same, 3 accounts. First one, realization account. पहला अकाउंट जो बनेगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट. फिर उसके बाद सोल ट्रेडर है, इसीलिए आएगा वाइस कैपिटल अकाउंट. वापस आएगा अकाउंट. यहाँ पर कोई एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर नहीं है दोस्तों, तो काम काफी आसान है, एकदम बेसिक. फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. तो पहला आइटम मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो है क्रेडिटर्स. सो एज यूजुअल हम लोग एक क्रेडिटर्स को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखेंगे. फिर दिख रहा है मुझे कैपिटल, तो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हम लोग लिख देंगे टोटल 2 लाख. लाइबिलिटीज ट्रांसफर. एसेट्स में मुझे 4 एसेट्स दिख रहे हैं, चारों एसेट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा. जैसे है प्लांट एंड मशीनरी, इसका कीमत दिख रहा है 1,05,000. मुझे दिखाई दे रहा है अगला आइटम, वो है स्टॉक. इसका वैल्यू है ₹50,000. नेक्स्ट मेरे पास है वो है डेटर्स. इसका वैल्यू मुझे दिख रहा है इज ₹1,10,000. और फाइनली मुझे दिख रहा है वो है कैश इन हैंड, और rather कैश एट बैंक, ₹20,000. जैसे आप सब जानते हो, एमलगमेशन में इतना हो गया तो 90% काम हो गया है, क्योंकि एक ही जर्नल एंट्री करना होता है, वो है पीसी ड्यू, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. दोस्तों वैल्यू है 2,31,750, 231,750. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय न्यू फर्म अकाउंट 2,31,750. फिर आगे हम लोग देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को. तो डेबिट का टोटल हमको दिख रहा है 1,55,000, 165, 265, 285. जबकि क्रेडिट का टोटल देखेंगे हम लोग तो काफी ज्यादा दिख रहा है, दैट इज क्रॉसिंग 3 लाख. सो इट इज 3,16,750. So we write the total of credit side on both the sides, 316,750.
और अगर आप लोग माइनस करोगे, अगर आप लोग माइनस करोगे दोस्तों कैलकुलेटर में, तो यू विल सी दैट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 31,750 आ रहा है क्या, चेक कर लीजिएगा। यस, 31,750 इसको लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 31,750 एंड बहुत ही सिंपल है, 231,750। अगर टोटल आ रहा है 231,750, क्या करना है इसका, तो काम आसान है, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड न्यू फॉर्म अकाउंट। तो एक्स में काफी टाइम लगा अपने को, लेकिन देखने जाओ तो वाई अपन ने 5 मिनट में खत्म कर दिया, क्योंकि हाथ साफ दिमाग साफ, एकदम क्लियर, फटाफट कॉन्सेप्चुअल। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट जितने क्लियर है उतने इजी है प्रॉब्लम्स। तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, वी आर डन विद दैट, 2,31,750 and 231,750 will be our balance sheet total. इतना देर से मैंने बोला नहीं, बट यस मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है। क्या आप लोगों ने सब ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है क्या? ऐसे हम लोग रोज मिलेंगे। आज हम लोग एमलगमेशन का लास्ट पार्ट में आ गए हैं। कल हम लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो ओल्ड फॉर्म, न्यू फॉर्म, ये सब चीज आज हम लोग यहाँ पर रखकर आगे बढ़ेंगे। यस, वेरी नाइस, परफेक्टली ऑल राइट। So let us go for the final kill. Are you all ready? Final kill. Type the word final kill. That is balance sheet of the new firm. That is Messrs. X and Y. Amalgamate होने के बाद amalgamated firm, we are going to prepare balance sheet. Yes, in balance sheet words particulars कभी नहीं लिखना है. Since I had copied it down, it appeared as it is. So we will have liabilities and assets. So on the liability side, we will always start with capitals. कहाँ से शुरुआत करेंगे? कैपिटल्स। कौन सा कैपिटल? जो एक्स और वाई ने लास्ट में ट्रांसफर किया। सो एक्स का कैपिटल होगा 2,19,375. आई एम जस्ट रीचेकिंग, यस 2,19,375। और वाई का कैपिटल होगा 231,750। वाई का कैपिटल होगा 2,31,750। दोनों का टोटल करना है। कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने अपना, ऑनलाइन कैलकुलेटर। क्या आप लोग के पास जरूर कैलकुलेटर होगा, उसका उपयोग करें। जहां पर ओरल जरूरत पड़ता था, ओरल बोलते थे, अब अगर आपको अलाउड है, प्लीज मेक यूज ऑफ दैट कैलकुलेटर ऑल्सो। So the total is 451,125. So the total is 451,525. 421,5. So 125. You have to be careful when you write. इसके अलावा डायरेक्ट पीसी स्टेटमेंट में चले जाने का, कहीं रुकने का नहीं। लाइबिलिटी में एक ही लाइबिलिटी है, वो है क्रेडिटर्स, और उसका टोटल लिख देने का 1,85,000. सो वी हैव ओनली वन लाइबिलिटी. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स. एंड द टोटल क्रेडिटर्स आर 1,85,000. Coming on to the assets, we are going to write assets one after the another. So we have plant and machinery. So we have a total of 67,500 and 94,500. Calculator use करेंगे हम लोग. 67,500 plus 94,500. टोटल आएगा 1,62,000. सो लिख देंगे हम लोग
1,62,000. अभी भी बहुत ज्यादा घाई नहीं करने का. You have to be very patient when you calculate because chances are high that you make silly mistake. जितना घाई आपल्या मराठीत म्हणतो आपण, जिथे घाई तिथे आपण गडबड करतो. So we have stock 80 and 45. So that's easy. I would say stock is 1,25,000. हा मी मराठीचं म्हण म्हणत होतो, घाईचं काम धोक्याचं. लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. And then we have debtors. So I would require my calculator again. It is 1,21,875 plus 1,07,250. That totals to 229,125. So 229,125. 2,29,125. And then we have cash at bank. You all remember that was only in Y 20,000. And both of them got a goodwill of 50,000 each, which meant it was rupees 1 lakh. So since we are done with everything, we are now to calculate. Go for the final step. तो मेरे पास 229,125 है, तो मैं पहले एसेट्स का टोटल कर लेता हूँ. 229,125 प्लस 1,62,000 प्लस 1,25,000 प्लस 20,000 प्लस 1 lakh. Totals to 636,125. 6,36,125. क्या यहाँ पर हो रहा है क्या? Yes, I can see the total 636,125 happening. So what happened, friends? Our balance sheet is tally. Very simple steps follow करना है, बरोबर जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जैसे मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था. हम लोगों का परफेक्ट 1 आवर में हम लोग जो है we were able to complete the question. I told you I will be taking lectures from 9 to 10 and मेरे घड़ी में exact time जो है वो दिखा रहा है. It is 9:57 p.m. and 30 seconds. I'm sure that all of you must have enjoyed what I am sharing with all of you. जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है. If that is the case, please let me know by the words thank you coming up. Any doubts? You can definitely put it up. I will check it out and share with you, solve with you the things. कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे. Yes, I'll be sharing the PDF on our website of Vedanta College. Those who are joined from outside, जो वेदांता वाले हैं वो लोग सब वेदांता करके टाइप करो तो आई विल नो, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूं. जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वेदांता के वेबसाइट में आना है और वहां पर आपको स्टूडेंट सेक्शन में PDF नोट्स करके मिल जाएगा. यू कैन डू दैट. जर्नल एंट्री का इस क्वेश्चन में हमको पूछा नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया. अगर उन लोग पूछते थे तो जरूर हम लोग पास करते. And that journal entry would have been very simple. If I talk to you orally, that is plant and machinery account debit, stock account debit, debtors account debit. X के केस में कैश एट बैंक नहीं था तो वहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू एक्स अकाउंट हो जाता था. और अगर Y के केस में बोलूं तो इट विल बी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट. यस, इस क्वेश्चन में अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो उन्होंने बोला था प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट. इसीलिए मैंने डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाया, जर्नल नहीं बनाया है.
अगर बोलते तो हम लोग जर्नल भी बनाते थे. But since it was not asked, we did not go for that. Before I wind up, let me remind you, my dear friends, that the most important aspect is old firm. आप जितना ओल्ड फॉर्म प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एमलगमेशन अच्छा होगा. So on that positive note, it has just struck 10 o'clock and I wind up my lecture. Thank you. Good night. See you all again tomorrow. Same link. Maybe a link will be different. I will be sharing it up and we will meet here on the same channel. Good night, everyone. Yes. Good night. Good night, everybody. See you all tomorrow. Good night.